हैं that you also get checked because this person at when you were present at this particular place, वो person भी आप लोगों के साथ था और he has been or she has been tested positive. So you also simply quarantine yourself or get tested for your COVID, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that register is working as a security log. तो यहाँ पर भी whatever activity is being done in your network, then system administrator or your server, जो आपका network administrator होता है, that person should create a security log and that will be automated. That will not be a manual working. ठीक है, कोई भी manual working नहीं होगी, hand to hand preparation नहीं होगा. That will be an automated working. सिस्टम के थ्रू वो वर्किंग होगी. और अगर आपके सिस्टम में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है एंड यू गॉट अवेयर अबाउट दैट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस सिक्योरिटी रजिस्टर से, अपने एंट्री एंड एग्जिट रजिस्टर से यू कैन चेक कि कौन क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है. देन यू कैन आइडेंटिफाई हु कैन बी अ क्रिमिनल, दैट क्रिमिनल इज इनसाइड पर्सन और आउटसाइड. और मैम ये लॉग विल लाइकली आइडेंटिफाई एबनॉर्मल एक्शन. इसका मतलब क्या है? Yes, whatever actions they are doing, first of all, you will be writing the that system will be identifying the name of the person who is entering, means your username. Then after that, it will be writing whatever actions you are performing. You are installing any application, you are searching anything, you are opening any application, you are opening any file. तो ये सारे actions क्या होंगे आपके. Then later on, if any problem occurs, then you can cross check ki which person has done which type of task in your network. Okay, Harshit? Yes, ma'am. Ma'am, confirm. Ma'am, आ गया. Okay. Okay. Next topic is keep system and applications patched and up to date. Patched and up to date means patch is a updation program, updation updated instructions by which you can improve the working of your software, your application programs. So time to time, your application patches should be installed to your system, to your software, and then it will be updated up to date. जब आपका software हो गया, then it will be aware with all types of malwares and all types of cyber crimes. Then it will be able to handle itself or secure itself from being a victim of cyber crime. तो क्या कह रहा है ये, keep systems and applications up to date and apply the latest security patches. Whatever new security mechanisms are there, that should be updated, that should be installed with your software. This will keep most hackers and cyber criminals from gaining access to systems by using known exploits and vulnerability. This is not a foolproof countermeasure, but it will make a successful breach more difficult for cyber criminals. तो यहाँ पर का मतलब सिंपल सा है कि if your system is up to date, your system is aware with all the security concerns, then whatever problem is there, whatever loopholes are there, whatever conditions are there for the hacking or for the cyber crime, that your system is aware with each and every consequences, each and every condition, then it will be able to save itself from being a victim of cyber crime. तो यहाँ पर जो last line कह रहा है कि this is not a full proof countermeasure. आपका ये नहीं कहा जा सकता that by this particular mechanism your system is 100% safe, but आपका जो भी loopholes हैं, आपकी percentage of being a victim of cyber crime get less. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Next point, use strong password and keep privileged accounts protected. Means आपको password strong use करना है. Yes, Fahad? मैम एप्लीकेशन पैच का मीनिंग फिर से बता दीजिए.
एप्लीकेशन पैच्ड की मीनिंग होती है कि आपके जो भी अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे होता क्या है, अब हमने कोई भी एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टीवी है, राइट? शायद आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, यस मैम। अभी हमारे पास एक टीवी है। अब टीवी भी पहले क्या थी, हमारे पास एक नॉर्मल टीवी थी, और उसके बाद हमारे यस पास एलईडी टीवी का कॉन्सेप्ट आया। अब एलईडी टीवी के साथ जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका आया एंड्रॉइड टीवी का, एंड्रॉइड इनेबल्ड टीवी, दैट इज योर मल्टीमीडिया और स्मार्ट टीवी जिसको हम बोलते हैं, राइट? अब स्मार्ट टीवी में सारी चीजें आपकी वाईफाई इनेबल्ड है, यू कैन कनेक्ट योर टीवी टू द वाईफाई एंड देन यू कैन एक्सेस एवरी टाइप ऑफ whatever apps are there, Sony Live, Amazon Prime and multiple Netflix etc apps are there. अब जैसे जिसके पास पुरानी एलसीडी टीवी है, जो एलईडी टीवी पुरानी है, उसमें यूएसबी ऑप्शंस होते हैं। अब उसने क्या करना है, टीवी उसने चेंज नहीं करना है अपना, उसने सिंपली क्या किया, वन Amazon Prime stick that person has bought and get it installed onto the TV, टीवी पर अटैच कर लिया। नाउ दैट पर्सन इज आल्सो एबल टू एक्सेस all the facilities that are available with an smart TV, ठीक है? तो क्या हुआ, अब Yes, हम ma'am. इस जो फायर स्टिक को अगर हम कंसीडर करें एज अ पैच, पैच क्या है, एक एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए, नए नए चेंजेस के साथ अपडेट करने के लिए जो एडिशनल पैकेजेस आते हैं, दोस पैकेजेस आर नोन एज पैचेस, ठीक है? ओके मैम। तो आपकी जो एप्लीकेशन पैच्ड का मतलब होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अप टू डेट है विद ऑल द न्यू इंस्ट्रक्शंस, then it will be able to handle the situations very easily. ओके मैम। Clear? यस मैम। Okay beta. Diksha Goyal, unmute yourself. Diksha Goyal. Okay. The next topic, when choosing a password, make it a strong password unique to that account and change it often. The average age of a social password today is years, and social media does not do a great job alerting you on how old your password is, how weak it is, and when it is a good time to change it. It is your responsibility to protect your account, so protect it wisely. What it is saying, कि whenever you are creating a password, then your password should be unique to that account, means it should not be same for each and every account. And the average age of social password means the age of password in social networking sites is years, means it won't say after some time that you change your password. If you are not changing your password, then it can sustain up to the years long. So, and your social media is not providing any type of message notification to you, your password has got so much of old, you have to change this. So whatever responsibility is there, that is on your own shoulders. So changing the password time to time, and it should be unique, it should not be it should be in such a form that no one should be able to guess that. So isko properly change karna is also your responsibility. If you have many accounts and password, use an enterprise password and privileged account vault to make it easier to manage and secure. Never use the same password multiple times. If you are having multiple accounts, more than one accounts are there, multiple accounts are there, then you should have one enterprise password and privileged account. Privileged account hona chahiye means administrator account, you can say कि आपका जो एक account होना चाहिए, that should be a main account and that password should be different, और उस particular account में you can manage, you can secure your passwords of other accounts, and same password आपको अपने account में बार बार use नहीं करना. Whenever you are changing a password, that should not be the prior ones.
जो पिछले आपके बने हुए पासवर्ड से उन पासवर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है. If your company is giving employees local administrator account or privileged access, then this seriously weakens the organization's cyber security. अगर आपने authorities का account authorities सारी अथॉरिटीज को कंटेन करता हुआ एक अकाउंट आपने जो है किसी भी एम्प्लॉय को दिया हुआ है, देन इट विल बी अ लैक, it will be a loophole on your side that ID can be hacked by anyone. This can mean the difference between a single system and a user account being compromised and entire organization's computer systems. In all advanced persistent threats, the use of privileged account has been the difference between simple perimeter breach and a major data loss, malicious activity, financial fraud, or worst case scenario, ransomware. So if you are handing over a privileged account to your employee, then you can face multiple situations like data loss, any malicious activity, financial fraud, or worst case scenario mein you can be a victim of ransomware crime and your account can be compromised by the hackers. Means it can be hacked by the hackers, your data can be misused by them. Organizations should quickly ensure that continuously audit and discover privileged accounts and applications that require privileged access to remove administrator rights where they are not required and adopt two-factor authentication to mitigate user accounts from easily being compromised. तो यहाँ पर ये कह रहा है that organization should quickly ensure that continuously audit and discover privileged account. तो जो भी आपका privileged account है that should be monitored every time and time to time it should be audited even, and if it is required then you can remove some administrator rights from there. और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं then use two-level authentication, means two-level verification process to mitigate user account from easily being compromised. two-level authentication use करने से क्या होगा, आपको साइबर क्राइम का विक्टिम होने से चांसेस आपके थोड़े कम हो जाएंगे. The frequency will be shortened or less of being a victim of cyber crime. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next topic is do not allow users to install or execute unapproved or untrusted applications, stop malware and ransomware at the endpoint. Means किसी भी तरीके से आपके सिस्टम पे untrusted, unauthorized, unapproved applications install नहीं होने चाहिए, and by this you can stop malware attacks, ransomware attacks. कैसे करेंगे ये देखते हैं. Another major risk that organizations run as a result of providing users with privileged access is that the user has the ability to install and execute applications as they wish, no matter where or how they obtained the installation executable. Means if you have given an privileged account to any of the person, then that person is having each and every type of permission with that particular account. आपके सिस्टम पे वो सभी तरीके की वर्किंग कर सकता है. Each and every type of working can be performed on that system. So as a result of that, that person will be able to install any of the software without any concern that from where that executable file he or she is getting. उसको वो executable file कहाँ से मिल रही है इसको concern
इस चीज का कंसर्न वो नहीं देखता है, इफ दैट पर्सन इज गेटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो क्या करता है, सिंपली क्लिक ऑन रन बटन एंड दैट फाइल गेट्स इंस्टॉल्ड ऑनटू योर सिस्टम. This can pose a major risk, allowing ransomware or malware to infect and propagate into the organization. And as a result, you can be a victim of ransomware or malware, and malware can infect your system, and or it can provide every information to the sender of that particular malware. It also allows the attacker to install tools enabling them to easily return whenever they wish. When a user with a privileged account is reading email, opening documents, browsing the internet, and clicking on numerous links, or when they simply plug in a USB device into the system, they can unknowingly install infectious or malicious tools. This enables an attacker to quickly gain access and begin the attack from within the perimeter, or in the worst case scenario, encrypt the system and sensitive data, then request a financial payment in return to unlock them. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि the user, while reading an email, opening any document, or browsing the internet, user clicks on multiple links or simply plugins the device into the system. आपकी USB device means your pen drive gets attached to the computer. By any of these means, unknowingly आपके system पर that user can install infectious or malicious software. Unknowingly जो है install कर सकता है, and then as a result of that, hackers will be able to quickly gain access of your network, and then in worst case scenario, they can encrypt your system or sensitive data, means they can convert your data into coded form by which you will not be able to access that, and in return they will be asking for the money from you. Organizations must implement security controls that prevent any application or tool from being installed onto the system by using application whitelisting, blacklisting, dynamic listing, real-time privilege evaluation, and application reputation and intelligence. This is one of the most effective way to prevent being the next victim of cyber crime. तो इन चीजों से बचने के लिए आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका प्रिविलेज्ड यूजर भी उस पर्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को आपके सिस्टम पर अपलोड ना कर, सॉरी सिस्टम पर इंस्टॉल ना कर सके, उसके लिए मैकेनिज्म है यहाँ पे व्हाइट लिस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग, डायनेमिक लिस्टिंग, रियल टाइम प्रिविलेज इवोल्यूशन एंड एप्लीकेशन रेपुटेशन एंड इंटेलिजेंस का, जिसमें आपका व्हाइट लिस्टिंग मीन्स अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट, blacklist means unapproved or untrusted which you don't want to install उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट. डायनेमिक लिस्ट और रियल टाइम privilege evolution means dynamic list means time to time it will be changing as per the rating of the softwares. Real time privilege elevation means it will that person will be able to install any of the software if the administrator is providing permission to that person, and application reputation and intelligence. Whatever type of working is there of the application, that will be considered for the installation of that particular software. By this way, you can secure yourself from being a victim of cyber crime. Clear at this point, everyone? Yes, ma'am. Yes, फहद बेटा बोलिए. मैम डायनेमिक लिस्टिंग, रियल टाइम और एप्लीकेशन रेपुटेशन वाला समझ नहीं आया. डायनेमिक लिस्टिंग, डायनेमिक का मतलब चेंजेबल, ठीक है. जो व्हाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग हमने करी थी, व्हाइट लिस्टिंग मींस यू आर अप्रूव फॉर
जिनको हम बोलते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जिनको हमने परमिशन दी हुई है। ब्लैक लिस्ट में अनपरमिटेड सॉफ्टवेयर की लिस्ट होगी जिनको हमें इंस्टॉल नहीं करना है। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब क्या होता है? ब्लॉक करना। ब्लॉक करने का मतलब दैट विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, दैट सॉफ्टवेयर विल नॉट बी इंस्टॉल्ड, मींस ब्लॉक्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट हो गई। डायनामिक लिस्टिंग मींस द लिस्टिंग विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। जैसे आपकी सॉफ्टवेयर की रेटिंग वगैरह चेंज हो रही है, वैसे आपकी डायनामिक लिस्टिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती है बाय द सर्वर। रियल टाइम प्रिविलेज एलिवेशन, आपकी रियल टाइम में मींस रन टाइम में, ओरिजिनल टाइम में जिस समय आप काम कर रहे हो उसी समय आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्रिविलेज को चेंज कर सकते हैं। मींस उसकी जो एक तरीके से रेटिंग होती है ना, उस रेटिंग को आप चेंज करके इंस्टॉल करा सकते हैं। एप्लीकेशन रेपुटेशन एंड इंटेलिजेंस मींस जो एप्लीकेशन की, जो सॉफ्टवेयर की अपनी एक वर्किंग मेथोडोलॉजी है और उसका एक अपना जो रेटिंग है, उस बेसिस पर भी आपकी लिस्टिंग चेंज हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बी डिसेप्टिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। डिसेप्टिव का मतलब धोखेबाज और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कि आपको कोई भी गेस ना कर सके कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो यहाँ पर धोखेबाज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज से धोखाधड़ी करेंगे या आप अपने नेटवर्क में किसी भी तरीके की जो है ना छेड़छाड़ करेंगे। दैट डजंट मीन बाय डिसेप्टिव और धोखेबाज। यहाँ पर धोखेबाज होने का मतलब सिंपल है, यहाँ पर है दैट you should not be a regular automated person, your working should not be automated, जो कि कोई भी पर्सन आपको गेस कर सके। जैसे अगर हमने कहा कि एक पर्सन, एक जैसे किसी भी पर्सन की एक्टिविटी जो होती है, दैट एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर होती है कि हाँ भाई इस समय हमें टहलने जाना है, इस समय हमें नाश्ता करना है, इस समय हमें स्कूल जाना है, इस समय हमें वहां से वापस आकर के ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो अगर कोई हमें मॉनिटर कर रहा है, then that person will be able to predict about us, means predict का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, that person will be able to tell others कि now this person will be doing this particular task, now this is the time for this task, तो अब वो यही करेगा। तो ऐसा यहाँ पर नेटवर्क में नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको कभी भी रेगुलर बेसिस पर सारे काम एक ही टाइम पर नहीं करने चाहिए। यू शुड चेंज योर शेड्यूल, आपका शेड्यूल चेंज होते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट्स क्रूशियल टू बी डिसेप्टिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस look to automation to help assist in their cyber security defenses, but in many cases this lends itself to predictability। अगर आप ऑटोमेटेड प्रोसेस कर रहे हैं, मींस सॉफ्टवेयर कंसर्न पर प्रोसेस कर रहे हैं, देन सॉफ्टवेयर विल बी डूइंग इट्स वर्क ऑन इट्स ओन। सॉफ्टवेयर अपना जो भी आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है, जिस समय का इंस्ट्रक्शन दिया, वो अपने आप अपना काम शुरू कर देगा। जैसे अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप इज एवरी डे क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ आवर चैट्स, और वो हमने अगर मिडनाइट सेट किया हुआ है, देन एवरी डे एट द मिडनाइट इट विल बी क्रिएटिंग अ बैकअप। अगर हमने आफ्टर एवरी आवर किया है, तो हर घंटे के बाद वो बैकअप क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो भी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वो काम तो अपने आप कर रहा है, बट आपके उस ऑटोमेटेड प्रोसेस की वजह से यू आर बीइंग प्रेडिक्टेबल। क्या होगा कि इस समय से पहले इसका डेटा हैक कर लो तो इसके पास इतने समय का अपडेशन नहीं होगा। स्कैन्स आर रन एट द सेम टाइम एवरी वीक। आप जो है अपनी वायरस वगैरह रन कर, वायरस एंटीवायरस वगैरह रन कराते हैं एट द सेम टाइम इन एवरी वीक। तो आपको पता है, तो अगला बंदा क्या कहेगा, इसका स्कैन रन हो गया, अब इसके बाद वायरस डालेंगे तो इसे अगले हफ्ते ही पता चलेगा। इस तरीके से पैचेस टेक प्लेस वंस पर मंथ। आपको क्या करना है, सिस्टम को अपडेट रखना है, पैचेस को मंथली नहीं इंस्टॉल करना है कि एक महीने में अब ये डेट आ गई, अब चलो अब ये इस डेट पर हमें जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स इंस्टॉल करने हैं। दैट शुड बी नेवर लाइक दैट। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। यू शुड परफॉर्म द अपडेशन प्रोसेस वेरी क्विकली।
ठीक है। असेसमेंट वंस पर क्वार्टर और पर ईयर, आपको ऑडिट वगैरह जो करना है वो आपका साल में एक बार या साल में क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स इन 4 मंथ्स। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको रैंडम वे में करनी है। नीचे का पैराग्राफ क्या कह रहा है, कंपनीज दैट आर प्रेडिक्टेबल आर वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स प्रोन टू साइबर अटैक, वहां पर साइबर क्राइम होने के चांसेस उनके साथ ज्यादा होते हैं। सो शुड एस्टैब्लिश अ माइंडसेट in which systems are updated and assessed on an ad hoc basis. Randomize your activity, आपको सिस्टम को क्या करना है, अपडेट और ऑडिट करना है on ad hoc basis, means in a very random manner. It should not be fixed pattern. आपका पैटर्न चेंज होते रहना चाहिए, रैंडम वर्किंग होनी चाहिए. दिस विल इंक्रीज योर कैपेसिटी टू डिटेक्ट एक्टिव साइबर अटैक्स एंड ब्रीचेस. So by this mechanism, you will be able to easily detect cyber attacks and your loophole. These best practices and tips will help companies reduce and dwell times of cyber breaches, as it makes it difficult for hackers and cyber criminals to remain hidden and increases the likeliness of detecting active cyber attacks. It also raises awareness in the organizations and engage employees in becoming an important role in detecting suspicious activity. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, by these above given practices, you can save yourself from being a victim of cyber crime, and hackers and cyber criminals remain hidden even after that. By these practices, you can detect them, and it will also raise awareness in organization. If your employees are also engaged with all these activities, with all these security points, then the uh, important, they will also be an important role, they will also play an important role in your organization's growth and success. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any queries there? Yes, फैद बेटा बोलिए. मैम एड हॉक बेसिस क्या होता है? एडहॉक बेसिस का मतलब होता है, एडहॉक बेसिस एक तरीके से ये समझिए कि टाइम टू टाइम पर्सन गेट्स चेंज, दे आर नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, दे आर नॉट ऑन परमानेंट बेसिस. तो आपका परमानेंट का मतलब ये हुआ कि फिर वो फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड इंटरवल हो गया आपका, ठीक है, कि इसी समय के बाद, इतने समय के बाद हम ये काम करेंगे. लेकिन एडहॉक बेसिस का मतलब हुआ कि देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, हम जब चाहेंगे हम मैनुअली अपनी वर्किंग कर सकते हैं. ऑटोमेटेड में क्या होगा, आप सिर्फ उसी समय काम होगा, और मैनुअल में क्या होगा, whenever you want to do any task, simply you have to click on the button और आप अपना काम कर सकते हैं. तो एडॉक बेसिस का मतलब ये हुआ कि मैनुअल प्रोसेस शुड आल्सो बी अवेलेबल. एज पर योर विश यू कैन स्टार्ट मैनुअल वर्किंग. आप समझ में आया फैद बेटा? यस मैम. और मैम ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना. जैसे अब मान लिया, जैसे हम इंस्पेक्शन बोलते हैं ना, यस जैसे मैम. मान लिया अभी हम अपनी कॉपीज चेक करते हैं, हमने अपनी कॉपीज चेक करी, हमारी कॉपीज चेक होने के बाद सुपरवाइजर्स के पास जाते हैं, राइट? यस मैम. ठीक है, तो सुपरवाइजर्स क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं. और ऑडिटिंग क्या होती है आपकी, ऑडिटिंग साल में एक बार होती है वैसे तो, बट आप चाहो तो मंथली ऑडिट भी कर सकते हो, वीकली ऑडिट भी कर सकते हो. जो भी इंस्पेक्शन आपकी हायर अथॉरिटीज करते हैं ना, दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑडिट. ओके मैम. ओके बेटा. तो स्टूडेंट, in this way your chapter comes to an end. Now we will be starting with exercises. Okay, multiple choice questions are there. One by one I'll be reading the question and you will be answering the question. First question is, the dash provides base to share information and services across the world without any geographical barriers. Yes, Aditya Agarwal.
मैम इंटरनेट. Yes, the right answer is internet. So the next question. Today, all the valuable resources available on the internet have to be saved from dash. Option A, robber. Option B, stealers. Option C, hackers. Option D, thieves. Yes, Muskan Gupta. I'm hackers. Yes, the right answer is hackers. Next question. An organization is a shared environment has to keep the information secured against dash users. Option A, authenticated. Option B, unauthenticated. Option C, resourceful. Option D, shared. Yes, Abhay Bansal. Abhay Bansal. Ma'am, option B. Unauthenticated. Yes, the right answer is option B, unauthenticated. Next question. Dash security counts much when it comes to financial and e-commerce applications. Option A, internet. Option B, network. Option C, services. Option D, security. Yes, Muskan. Ma'am, internet. Hmm? Abhay Bansal? Ma'am, option D. Security. Security. What will be the statement then? Security Network. counts much. Network. Security. Yes, networks या फिर services. दो options हो सकते हैं, but you will be writing here network security counts much. Option B, network is the right answer. Next question. Next question is dash systems are difficult to survive without proper security provisions.